कहते हैं मंजिल से रोमांचक सफ़र होता है, और अगर मंजिल और सफ़र दोनों ही खूबसूरत है तो क्या कहें। आज ऐसे ही सफ़र पे हम लोग निकले हैं मऊ वाटरफॉल्स देखने और पास ही का विंडमिल पार्क जाए। तो आइए मेरे साथ इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर विंडमिल पार्क और मऊ वाटरफॉल्स के नज़ारे एंजॉय करें। Hey beautiful people, good morning. Salam, pranam, sat shri akal. Good morning guys. Welcome to my channel. आज संडे है, संडे को ब्रेकफास्ट राइड रहती है। आज हम अपने ग्रुप के साथ में ब्रेकफास्ट राइड जा रहे हैं। इट इज 10 to 7 o'clock. मुझे 7 o'clock तक पहुंचना था। 7 o'clock को फ्लैग ऑफ है। आई एम ऑलरेडी लेट. लेट्स सी इफ वी कैन रीच. वी आर अबाउट टू रीच द फ्लैग ऑफ पॉइंट. अब देखते हैं या चले गए छोड़ के। छोड़ दिया होगा तो मैप दिया होगा, पता नहीं क्या है। सी वो भूल ही रह गए। आई एम 10 minutes लेट. क्या है आई एम क्यूरियस. Did they leave? Did they leave? Did they leave? Did they leave? Yes, they left. They left already. I'll have to catch up with them now. Okay. Okay. Let's set the map and leave. We have finally found our clan. हम लोग ने हमारा clan को ढूंढा है. मिल गए फाइनली शेल में सेकेंड ग्रुपिंग पॉइंट पर. मैंने पेट्रोल भी फुल कर दिया. सेट टू गो. सेट टू रोल. लेट्स गो. जो पावर पर है ये ग्रुप के लीडर है भूषण. स्टार्ट विद द राइड. प्यास लगी, पानी भी नहीं पिया मैंने इतना तेज से. तो अभी हाईवे छोड़ दिया है. अब पहुंचेंगे हम लोग उस विलेज के रोड्स पर. वाइंडिंग रोड्स. मजा आएगा. ट्रेन क्रॉसिंग. ग्रीन ग्रीन हो गया है. मानसून पुणे को पूरा ग्रीन बना देता है. पूरा पूरा ग्रीन. पूरा रास्ता आसपास में पूरा ग्रीन हो गया है. पुणे के हिल्स कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम नहीं है मानसून में.
सारा ग्रीनरी फैला हुआ रहता है। Everything is beautiful. Wow. Nothing green. Started raining. Raining. See, everything is so beautiful. Everything is so green. And they have also installed that greenhouses everywhere. Looks so good, so beautiful. बारिश शुरू हो गई है, लीडर ने रुकना चाहिए कहीं, रेनकोट पहन लेते। लीडर लीडर वेट लीडर। द फर्स्ट वाटरफॉल्स ऑफ द ट्रिप। पानी कम है, probably because it is not raining. स्कूल के बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे नहीं, फैमिली ट्रिप है। ओह वाओ, वाटरफॉल वाटरफॉल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? Okay, there is our leader, Mr. Bhushan, the bobber. भूषण बॉबर ऊपर जा रहे हैं। Waterfall, very good waterfall. Okay.
This is going to be fun. So many hairpin bends. That was first. This is second hairpin bend. Third hairpin bend. Oh wow! The bike is slipping like anything. Tires पुराने हो चुके हैं. It's a caution to change the tires. Okay. Fourth hairpin bend. This is fifth hairpin bend. ये रास्ता तेज नहीं था. पूरा ऑफ-रोडिंग करते हुए लोग ऊपर जाते थे. एक अलग मजा था. It is paved now. paved है तो रास्ता फटाफट चल रहा है. लेकिन ऑफ-रोड का थ्रिल है वो. Coming up 7th hairpin bend. Yes. 8th hairpin bend. Awesome. 9th hairpin bend. Fine. 10th hairpin bend. Is it the last? Not sure. Oh, वो लोग तो बहुत ऊपर है. Okay, 11th hairpin bend. रोड तो पूरा का पूरा वाइंडिंग्स है, पूरा का पूरा. And this is 13th hairpin bend. Okay. Oh. Slip slap, slip slap. Okay. That's village road. Not hairpin bend.
Where is the windmill? यहाँ से ऑफ रोड है, तो नहीं है, ये और ग्रामीण रोड। 6 सेकंड नहीं, 6 सेकंड नहीं। ओके ओके ओके, हाँ यस, 6 सेकंड नहीं है। इसकी अटक नहीं रही। ओह शिट, ट्रैक्शन ऑफ नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली ट्रैक्शन ऑफ किया उसने। Going, no problem, going, no problem, going. Good. So far, so good. Going. Good. So far, good. It's on gravel road, but the incline is making it difficult. Otherwise, it's normal. It is okay. We are used to in the city also. Okay, another hairpin bend. I think this is 14. I lost now. Okay, great. Nice. No problem. पीछे उतरते वक्त तो गति भी अरे windmill तो lost in the sky हो गया। This windmill is lost in the sky. Not able to see the wings of that windmill. Wow. Okay, it is getting tricky. Yeah. Wave.
सामने वाला रुक गया, मेरे को रुकना पड़ा। ओके वेट, ओके दे आर एंडिंग हियर आई थिंक। सही है। ट्रैक्शन ऑफ किया था शायद उन्होंने। बरं जायचं आहे? हा पूर्ण आधी हे होता, अनपेव्ड होता पूर्ण वरपर्यंत, खालनं परपर्यंत पूर्ण अनपेव्ड होता, पूर्ण ऑफरोड होता। याला अमर ऑफरोड म्हणायचे ना याला, ते हे आता त्याला पेव केलंय। हे पण नव्हता, एक ग्रॅव्हल पण नव्हता आणि खाली पक्का रोड पण नव्हता, फक्त मड। कंट्रोल करना है, जमा हुआ है पत्थर, टायर की वजह से पूरा पत्थर जमा हो रहा है वहाँ पे भी। Going to be mud everywhere. डायरेक्ट कंपटीशन में पिरेली आता है, और सस्ते में देखने जाओगे तो अपोलो, अल्फा H1, बट उसका वेट